dear students, welcome to English literature class. Students, today we are going to start chapter number 9, A Sound of Thunder, written by Ray Bradbury on page number 64 of class 7. Students, it is a science fiction story about a man named Eccles who hires a time travel company to take him in the age of dinosaurs. Time travel allows the common man to experience the past in ways never before thought possible. Eccles, a hunter, pays $10,000 to travel back in the age of dinosaurs to hunt a Tyrannosaurus Rex. So, reading from the page number 64, first paragraph of the story, the sign on the wall seemed to quiver under a film of sliding warm water. Eccles felt his eyelids blink over his chair, and the sign burned in this momentary darkness. Now, students, Mr. Eccles was standing outside the office. What did he see? जैसे हम स्टूडेंट्स हियर द सीन ऑफ दैट टाइम इज शोन व्हेन द Eccles was standing outside the office. What did he see there? उसने क्या देखा वहाँ पे? The sign on the wall seemed to quiver under a film of sliding warm water. जैसे कोई साइन उसने वॉल के ऊपर देखा, वो ऐसे शिवर कर रहा था. तो क्यों उससे ऐसा लग रहा था जैसे वो साइन हिल रहा हो? क्योंकि तब बारिश का पानी जैसे उसके आगे से निकल रहा था, स्लाइडिंग वार्म वाटर, वैसे ही ऊपर से नीचे तक उसके आगे पानी आ रहा था और अंधेरे में लाइट का रिफ्लेक्शन उसके ऊपर पड़ रहा था. Eccles felt his eyelid blink over his chair. जैसे हम आँखों को झपकाते हैं, जब Eccles ने ऐसे ही ब्लिंक किया, and the sign burned in this momentary darkness. देखते ही देखते वो साइन चमकने लगा. फाइन, क्योंकि वाटर की वजह से लाइट पड़ने पर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लाइट की रिफ्लेक्शन आ गई थी, तो वो जो साइन है दैट वाज ब्राइटिंग. ओके. टाइम सफारी इनकॉर्पोरेशन सफारीज टू एनी ईयर इन द पास्ट. यू नेम द एनिमल, वी टेक यू देयर, यू शूट इट. जो टाइम सफारी इनकॉर्पोरेशन कंपनी है वो लोगों को, कॉमन पीपल को पास्ट में लेके जाती है. और यहाँ पे टाइम सफारी इनकॉर्पोरेशन मतलब लोगों को कह रही है कि वो उनको एनिमल्स का नेम बताए और जो टाइम सफारी कंपनी है उनको वहाँ पे लेके जाएगी ताकि वो उस एनिमल को शूट कर सकें. Warm phlegm gathered in Eccles' throat. He swallowed and pushed it down. The muscles around his mouth formed a smile as he put his hand slowly out upon the air, and in that hand waved a check for $10,000 to the man behind the desk. Does this safari guarantee I come back alive? We guarantee nothing, said the official, except the dinosaurs, he turned. Students, now Eccles feels phlegm gathered in his throat as he asked the company agent behind the reception desk whether the company guarantees he will come back alive. The agent informs him that there is no guarantee except the dinosaurs. This is Mr. Travis, your safari guide in the past. He will tell you what and where to shoot. If he says no shooting, no shooting. If you disobey instructions, there is a stiff penalty of another $10,000 plus possible government action on your return. Students, now the agent informs him that there is no guarantee except the dinosaurs, and that if Eccles disobeys any instructions, he will be fined another $10,000 plus possible government action on his return. And he also informs that there is a man, Mr. Travis, standing beside him, who is the safari guide in the past. Eccles glanced
across the vast office at a mass and tangle, a snaking and humming of wires and steel boxes, at an aurora that flickered, now orange, now silver, now blue. There was a sound like a gigantic bonfire burning all of time, all the years, and all the parchment calendars. All the hours piled high and set aflame. Unbelievable. Eccles breathed the light of the machine on his thin face. A real-time machine? He shook his head. Makes you think if the election had gone badly yesterday, I might be here now running away from the results. Thank God Keith won. He will make a fine president of the United States. So students, in the office, Eccles saw large number of tangled wires going all over the place. There were steel boxes and aurora that flickered various colors. That there was a gigantic bonfire burning made up of parchment calendars. Eccles was amazed to see the real-time machine. He started to wonder if the election had gone badly the day before, he would have been trying to run away from the results. He thanked Keith for winning the election, saving him from running away. So students, what did we read till now? अभी तक हमने पढ़ा कि एक्कल्स जो था वो टाइम सफारी इनकॉर्पोरेशन के पास जाता है, $10,000 उनको पे करता है पास्ट में जाने के लिए, क्योंकि वो डायनासोर्स की एज में जाना चाहता है। तो यहाँ पे सीन दिखाया गया कि उसने ऑफिस में क्या क्या चीज़ें देखी, जैसे कि वायर्स वगैरह वहाँ पे ट्विस्ट होके काफ़ी फैली हुई थी, ये सारा सीन उसने देखा। और अब इस पैराग्राफ में लास्ट पैराग्राफ अनबिलीवेबल वाला, तो उसमें वो अपना जो रिसेप्शन ऑफिशियल बैठा था वहाँ पे उसके साथ कन्वर्सेशन करने लगता है, वहाँ पे मतलब बातें करने लगता है कि कल वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में जो इलेक्शन हुए थे उसमें केथ है जो वो प्रेसिडेंट बना है, तो वो इस चीज़ के लिए थैंकफुल है, क्योंकि अगर कोई ओपोनेंट जो केथ के ओपोनेंट खड़ा हुआ था वो वहाँ का प्रेसिडेंट बन जाता तो मतलब ये चीज़ उनके लिए अच्छी नहीं थी, और तब उसको वहाँ से उस प्रेजेंट से पास्ट में जाना पड़ जाता। फाइन स्टूडेंट्स, and rest of the part of the story we will read in our next video. Thank you. Have a wonderful day.